Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 2, which is Microsoft Windows. So without wasting any further time, let's start it. The name of our chapter is Microsoft Windows, and the topics which we will discuss in this lesson are File, Folder, Managing Files and Folders, Starting Windows Explorer, Viewing File and Folder, Finding File and Folder, Working with Control Panel, Changing Date and Time, About Fonts, Put your computer in hibernation, and avoid pressing two keys together. So, you have learned in your previous class about MS Windows operating system. Nowadays Windows 10 जो है वो most popular operating system है. MS Windows के पास में GUI यानी कि graphical user interface होता है जो कंटेन करता है ग्राफिक्स एंड आइकन्स जिनको हम यूज करते हैं, जिनको यूज किया जाता है बाय यूजिंग अ कंप्यूटर माउस. इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. विंडोज 10 एक बहुत अट्रैक्टिव लुक विद कलरफुल थीम्स प्रोवाइड करता है. इट कम्स विद न्यू फीचर्स, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स एंड फास्टर स्पीड. So window has simplified the task of managing data in our computer. Data in our computer is organized in the shape of files and folders. So what is a file? फाइल एक बेसिक यूनिट होता है ऑफ स्टोरेज इन विंडोज जो एनेबल करता है कंप्यूटर को टू डिस्टिंग्विश वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर. नाउ व्हेन यू यूज अ प्रोग्राम या फिर कोई एप्लीकेशन टू डू सम वर्क, आप सेव कर सकते हो अपने वर्क को एज अ फाइल ऑन द कंप्यूटर बाय स्पेसिफाइंग अ नेम टू इट. या फिर फाइल एक कलेक्शन है ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल ऑन वन सब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड टुगेदर इन अ कंप्यूटर या फिर ऑन अ डिस्क विद अ पर्टिकुलर नेम. नाउ द फाइल नेम कंसिस्ट करता है दो मेन पार्ट्स. पहला होता है मेन फाइल नेम एंड उसका एक्सटेंशन. नाउ फाइल एक्सटेंशन इज ऑफ 3 कैरेक्टर्स. फाइल एक्सटेंशन एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो विंडोज को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल के अंदर स्टोर्ड है एंड विच एप्लीकेशन शुड ओपन इट. इसको बोला जाता है एक्सटेंशन बिकॉज ये अपीयर होता है एट द एंड ऑफ द फाइल नेम फॉलोइंग अ पीरियड. नाउ फाइल नेम कैन हैव अप टू 255 कैरेक्टर्स. The various files and folders are stored in the hard disk of the computer. Hard disk work करता है like filling cabinet and the cabinet stores information of files and folders. For example, in the file name myfile.doc, यहाँ पे जो extension है वो क्या है .doc. ये बताता है विंडोज को that ये एक document file है that can be opened in a program associated with the extension जैसे MS Word. फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक फाइल कैबिनेट की तरह वर्क करता है जिसके अंदर हम अपनी रेलेवेंट फाइल्स को रखते हैं. इफ यू पुट थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स ऑन समवन्स डेस्क, इट विल बी वर्चुअली इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर फाइल जब भी आपको उसकी नीड होगी. दैट्स व्हाई पीपल ऑफन स्टोर करते हैं पेपर फाइल्स इन फोल्डर्स इनसाइड अ फिलिंग कैबिनेट. नाउ अरेंजिंग फाइल्स इनटू लॉजिकल ग्रुप्स बहुत इजी बना देता है टू लोकेट एनी पर्टिकुलर फाइल. फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इनसाइड अ फोल्डर. जैसे हम एक फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उन फोल्डर्स को बोला जाता है सब फोल्डर्स. फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर वर्क एग्जैक्टली द सेम वे. दिस इज व्हाट अ टिपिकल फोल्डर आइकन लुक्स लाइक. नाउ ये हमारा माय डॉक्यूमेंट फोल्डर है. दिस इज अ नॉर्मल फोल्डर, अ फाइल फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स. फोल्डर इज एम्प्टी. सो दिस इज हाउ द फोल्डर्स आर डिस्प्लेड. फोल्डर्स आर नॉट, फोल्डर्स जो है वो सिर्फ फाइल्स को होल्ड नहीं करते बट दे ऑल्सो होल्ड अदर फोल्डर्स. आप क्रिएट कर सकते हो एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर्स एंड ईच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड एडिशनल सब फोल्डर्स. फोल्डर्स डू नॉट हैव एनी एक्सटेंशन. जैसे फाइल्स में हमारे पास एक्सटेंशन होता है, फोल्डर्स में वी डोंट हैव एनी एक्सटेंशन एंड दे मे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, प्रोग्राम्स एटसेट्रा. मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो विंडोज के अंदर हम लोकेट करते हैं अपने फाइल्स को और फोल्डर्स को या तो डॉक्यूमेंट्स में या फिर विंडोज एक्सप्लोरर में. माई डॉक्यूमेंट्स एक कन्वीनियंट वे है इन व्यूइंग अ फोल्डर या फिर विंडो एट अ टाइम. विंडो एक्सप्लोरर का यूज किया जाता है फॉर व्यूइंग, एक्सप्लोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इन अ कंप्यूटर. विंडोज एक्सप्लोरर एनेबल करता है हमें टू डिस्प्ले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो इंक्लूड करता है ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स. और स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर, उसके लिए हमें ओपन करना है अपना विंडोज एक्सप्लोरर. हम दो वेज में ओपन कर सकते हैं. राइट क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे एंड सिलेक्ट विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन, या फिर आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज ऑप्शन में से आप क्लिक करोगे विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन पे. विंडोज एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाएगी एंड वी विल सी दैट वो दो पेन्स में हमारे पास डिवाइडेड है, एक लेफ्ट पेन और राइट पेन. जो लेफ्ट पेन है उसको हम ट्री पेन भी बोलते हैं जो शो करता है फोल्डर ट्री एंड इट शोज डिफरेंट ड्राइव्स ऑफ कंप्यूटर एंड द हायरार्की ऑफ फोल्डर्स इन ईच ड्राइव.
क्लिकिंग ऑन अ ड्राइव या फिर फोल्डर डिस्प्ले कर देता है फोल्डर और फाइल्स को जो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं इन द राइट पेन, ऑल्सो नोन एज कंटेंट पेन। राइट पेन को हम कंटेंट पेन भी बोलते हैं। व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर्स, तो विंडो प्रोवाइड करता है हमें बहुत सारे वेज टू अरेंज एंड आइडेंटिफाई योर फाइल while you are viewing them. So the information can be viewed in different modes, जैसे कि पहला आता है थंबनेल व्यू। तो थंबनेल व्यू डिस्प्ले करता है इमेज ऑन अ फोल्डर आइकन सो दैट आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कंटेंट ऑफ द फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टोर करते हो पिक्चर्स इन सेवरल डिफरेंट फोल्डर्स इन थंबनेल व्यू, आप बता सकते हो एट अ ग्लांस दैट विच फोल्डर कंटेन्स द पिक्चर दैट यू वांट। आइकन व्यू डिस्प्ले करता है हमारे फाइल्स और फोल्डर्स को एज स्मॉल आइकन, एंड यहाँ पे जो फाइल नेम है वो डिस्प्ले होता है अंडर दी आइकन। देन वी हैव टाइल्स व्यू। ये जो ऑप्शन है इसका यूज किया जाता है टू डिस्प्ले फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स व्हिच आर लार्जर देन दोज इन आइकन्स व्यू। लिस्ट व्यू के अंदर ये डिस्प्ले करता है कंटेंट, जैसे लिस्ट ऑफ फाइल्स या फिर फोल्डर्स, नेम्स प्रीसीडेड बाय स्मॉल आइकन। एंड ये जो व्यू है ये यूजफुल होता है अगर हमारा फोल्डर बहुत सारी फाइल्स कंटेन करता है दैट यू वांट टू स्कैन द लिस्ट फॉर द फाइल नेम, एंड आप सॉर्ट कर सकते हो अपने फाइल्स और फोल्डर्स को इन दिस व्यू। देन वी हैव डिटेल्स व्यू। नेक्स्ट वी हैव डिटेल्स व्यू। ये जो ऑप्शन है इसका यूज किया जाता है फॉर म्यूजिक फाइल्स एंड फोल्डर्स इंक्लूडिंग डिटेल्ड फैक्ट्स अबाउट द फाइल्स, फॉर एग्जांपल नेम, टाइप, साइज, डेटा मॉडिफाइड एटसेट्रा। फाइंडिंग अ फाइल या फिर फोल्डर, आपका कोई फाइल या फोल्डर है जो एग्जिस्टिंग है कंप्यूटर में, आपको उसको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? विंडो ऑफर करता है नंबर ऑफ वेज टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स, एंड सर्च कंपेनियन ऑफर्स द मोस्ट डायरेक्ट वे टू लोकेट अ फाइल। यूज सर्च कंपेनियन इफ, अगर आप देख रहे हो कोई कॉमन फाइल टाइप, या फिर आप रिमेंबर करते हो ऑल या फिर पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द फाइल या फिर फोल्डर दैट यू वांट टू फाइंड, यू नो द डेट व्हेन यू लास्ट मॉडिफाइड अ फाइल। जब भी आपको ये पता होता है कि आपने अपनी फाइल को लास्ट कब मॉडिफाई किया था, तब भी आप सर्च कंपेनियन का यूज कर सकते हो। तो फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सर्च अ फाइल या फिर फोल्डर। आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे, देन क्लिक ऑन सर्च ऑप्शन, सर्च रिजल्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आप क्लिक करोगे ऑल फाइल्स एंड फोल्डर ऑप्शन पे इन द सर्च कंपेनियन टास्क पेन which is located on the left side. Now type either a part या फिर complete name of the file or folder, and या फिर आप टाइप कर सकते हो word या फिर phrase that is present in the file. In case अगर आपको पता है सिर्फ part of the file name, तो आप यूज कर सकते हो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ताकि आप लोकेट कर सको all those files and folders that contain the part of their name. This and this are two wildcard characters जिनको commonly यूज किया जाता है for certain information. इसका मतलब है any type and number of character in its place, और इसका मतलब है that search for all the files जिनका extension क्या होगा .doc। R *doc ये सर्च करता है फाइल्स जिनका एक्सटेंशन .doc होगा and their name begins with the letter R, and question mark means one character in its place. For example, this will search all the files जिनका नेम कंटेन करता है सिर्फ वन कैरेक्टर, एग्जाम्पल rdoc, tpps, ttext etc. मैथ्स ये जो है ये सर्च करेगा फॉर ऑल द फाइल्स जिनका नेम बिगिन होगा विद मैथ्स फॉलोड बाय एनी वन कैरेक्टर एंड एक्सटेंशन दैट इज .docs, example maths1.doc, maths2.doc etc. If you do not know either piece of information, या फिर आपको कुछ भी नहीं पता है, you don't want to narrow your search further, तो आप select कर सकते हो one or more of the remaining options, जैसे in look in text box यहाँ पे आप क्लिक कर दो drive, folder या फिर network you want to search in, then click on the when was it modified to look for the files that were created or modified or between the specific dates. Now आप click कर सकते हो on the search button, and if you get too many results या फिर no results, so try using additional search criteria to make your search more specific. Working with the control panel, तो control panel जो है MS Windows 10 का, it has been loaded with icons. ये जो icons हैं they are used to manage various resources and operate computer system. कंट्रोल पैनल ऑल्सो यूजफुल है जब भी हमें अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स को चेंज करना है, एडिशन या फिर रिमूवल करना है किसी प्रोग्राम का, या फिर डेट और टाइम को चेंज करना है। तो कंट्रोल पैनल एक सिस्टम फोल्डर है यूजिंग विच हम चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं अपनी करंट सेटिंग्स की अपीयरेंस में ऑफ द विंडोज, एंड ये इंक्लूड करता है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ आवर डेस्कटॉप, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, सेटिंग क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। तो ये जो सेटिंग्स हैं ये कंट्रोल
These settings control nearly everything about your Windows look and works. ये हमेशा ये चीज कंट्रोल करती है कि आपकी विंडोज कैसे वर्क करेगी, कैसे दिखेगी, एंड ये अलाउ करती है हमें टू सी विंडोज द वे यू वांट. चेंजिंग डेट एंड टाइम, तो जो टास्क बार है ऑफ विंडोज 10 वो कंटेन करता है सिस्टम ट्रे जो शो करता है करंट डेट एंड टाइम, एंड ये जो ऑप्शन है ये अलाउ करता है हमें टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम. डबल क्लिक ऑन डेट एंड टाइम ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल, देन डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा लाइक दिस. यहाँ पे आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन मंथ लिस्ट पे एंड सेलेक्ट करोगे करंट मंथ. देन आप क्लिक करोगे अप स्पिनर पे या फिर डाउन स्पिनर पे इन द ईयर लिस्ट टू सेलेक्ट द ईयर, या फिर आप टाइप कर दोगे करेक्ट ईयर को. क्लिक ऑन द करेक्ट डे इन द कैलेंडर एंड क्लिक ऑन ओके ऑप्शन. चेंज करने के लिए टाइम को आप क्या करोगे, चेंज करोगे आर, सिलेक्ट करोगे आर एंड देन क्लिक ऑन द एरोज टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज द आवर्स. सिमिलरली आप चेंज कर सकते हो मिनट, सेकंड्स एंड एएम पीएम इंडिकेटर. नाउ अबाउट फॉन्ट्स, तो जो कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं टाइपिंग में अपने टेक्स्ट के वो यूज करते हैं सेम डिजाइन, दे आर कॉल्ड फॉन्ट्स. तो फॉन्ट सेटिंग्स का यूज किया जाता है टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड प्रिंटेड टेक्स्ट. आप यूज कर सकते हो फॉन्ट सेटिंग्स का इन कंट्रोल पैनल टू व्यू, एड न्यू फॉन्ट्स, डिलीट एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स, लुक एट अ सिंपल गिवन हियर. जैसे डबल क्लिक करना है हमें ऑन फॉन्ट्स इन कंट्रोल पैनल, फॉन्ट्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. नाउ टू लुक एट अ सैंपल ऑफ अ फॉन्ट आप डबल क्लिक कर सकते हो ऑन एनी गिवन फॉन्ट. To add new fonts, follow the given procedure. आप click करोगे on install new font पे from file menu, select the drive and then open the folder that contain fonts. Now select करोगे आप font that you want to add and click on OK option. Font will be added in the list of existing fonts. आप डिलीट भी कर सकते हो किसी फॉन्ट को, तो आपको क्लिक करना है on the font that you want to delete, select the file menu and click on delete option. माउस इज नॉट वर्किंग, तो एज्यूम दैट आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे एंड आप सडनली आपका जो माउस है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है. ऑल द ट्रबल शूटिंग स्किल्स आर ऑफ नो हेल्प. डोंट गेट पैनिक, विंडोज के पास एक फीचर है जो हेल्प करेगा आपको टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड फॉलो द स्टेप्स टू मेक योर कीबोर्ड फंक्शन लाइक अ माउस. तो उसके लिए आप सेलेक्ट करोगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को फ्रॉम कंट्रोल पैनल विंडो, देन आप क्लिक करोगे माउस टैब पे एंड एक्टिवेट द चेक बॉक्स यूज माउस कीज. तो यूज माउस कीज को आप एक्टिवेट कर दोगे, देन क्लिक ऑन ओके. विद द न्यूमेरिक लॉक इन ऑफ मोड आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिक कीपैड को फॉर योर माउस फंक्शन. अगर आपका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, जैसे लेट्स कंसीडर रिवर्स सिनेरियो कि आपका कीबोर्ड जो है उसने वर्क करना स्टॉप कर दिया है बट माउस वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे विंडोज के पास हम एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं विच कैन बी ऑपरेटेड विद द माउस. तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना है एप्लीकेशन वेयर यू विश टू यूज कीबोर्ड, देन क्लिक ऑन स्टार्ट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन सेलेक्ट एसेसरीज एंड गो टू एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. वहां से आप सेलेक्ट करोगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन को, एक कीबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे एज अ विंडो. क्लिक ऑन द डिजायर्ड कीज एंड इफेक्ट वुड बी डिस्प्लेड इन द एप्लीकेशन. Why to double click the mouse? तो विंडोज के पास एक फीचर है टू रिप्लेस द डबल क्लिक विद सिंगल क्लिक. फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स एंड फॉरवर्ड द प्रैक्टिस ऑफ डबल क्लिकिंग द माउस फॉरएवर. तो आप क्लिक करोगे स्टार्ट पे एंड देन ओपन कंट्रोल पैनल, सेलेक्ट द फोल्डर ऑप्शंस, एक्टिवेट सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम ऑप्शन अंडर क्लिक आइटम एज follow section. Now from the single click sub options आप prefer करोगे to activate underline icon titles only when I point at them. Now enjoy the experience of working with single click. Now remember to select any item from the list of items. आपको बस अपने माउस पॉइंटर को वहां पे प्लेस करना है एंड द आइटम वुड बी हाईलाइटेड, और ओपन करने के लिए आपको बस एक बार क्लिक करना है. पुट योर कंप्यूटर इन हाइबरनेशन. तो हाइबरनेशन एक स्टेट होता है जिसमें हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन होता है टू सेव पावर, बट फर्स्ट सेव्स एवरीथिंग इन द मेमोरी ऑन योर हार्ड डिस्क. यानी कि शट डाउन होने से पहले वो आपका सारा वर्क अपनी मेमोरी में सेव करेगा. व्हेन यू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे तो योर डेस्कटॉप इज रीस्टोर्ड एग्जैक्टली एज यू लेफ्ट इट. यानी कि शटडाउन के बाद में भी जब आप उसे ओपन करोगे वो वहीं से ओपन होगा जहां पे आपने उसको छोड़ा था. यूज हाइबरनेशन टू सेव पावर when you are away from your computer for any extended time while working. यानी कि अगर आप काम करते टाइम आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है अपने कंप्यूटर से, उस टाइम पे आप हाइबरनेशन का यूज कर सकते हो. तो फॉलो द स्टेप्स टू पुट योर कंप्यूटर इनटू हाइबरनेशन. क्लिक ऑन स्टार्ट ऑप्शन, select control panel, open power options in control panel window, click the hibernate tab, select the enable hibernation checkbox and then click apply.
Avoid pressing two keys together. तो often pressing two keys together, जैसे sometimes हमें प्रेस करनी पड़ती है थ्री कीज टुगेदर लाइक कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये एक प्रॉब्लम है. विंडो ऑफर करता है हमें एक वे थ्रू द फैसिलिटी ऑफ स्टिकी कीज, जहां पे हम प्रेस करते हैं कॉम्बिनेशन कीज का वन बाय वन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द कीज टुगेदर. दैट मीन्स अगर वो कॉम्बिनेशन कीज हैं स्टिल हमें उनको एक साथ प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हम वन बाय वन उनका यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए वी हैव सर्टेन स्टेप्स. हम स्टार्ट ऑप्शन पे जाएंगे, देन गो टू कंट्रोल पैनल, सेलेक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फ्रॉम द कंट्रोल पैनल. नाउ अंडर द कीबोर्ड टैब हमें एक्टिवेट करना है स्टिकी कीज को बाय क्लिकिंग द टिक बॉक्स, देन क्लिक ऑन ओके टू एग्जिट फ्रॉम द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन डायलॉग बॉक्स. नाउ आप ट्राई आउट कर सकते हो डिफरेंट की कॉम्बिनेशंस. फॉर एग्जांपल अगर कैप्स लॉक की जो है वो ऑफ मोड में है तो आप ट्राई कर सकते हो टू राइट कैपिटल लेटर्स by using shift key and the letter key one by one instead of normal process जिसमें हम होल्ड करते हैं shift key और लेटर एक साथ या फिर सिंबल की. Let's revise the chapter. Folder is like a cabinet जहाँ पे हम अपनी relevant files को स्टोर करते हैं. फाइल नेम कंसिस्ट करता है दो मेन पार्ट्स, मेन फाइल नेम एंड इट्स एक्सटेंशन. फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इनसाइड अ फोल्डर और उसको बोला जाता है सब फोल्डर. विंडोज एक्सप्लोरर एनेबल करता है हमें टू डिस्प्ले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स. आइकन व्यू डिस्प्ले करता है हमारे फाइल्स को एंड फोल्डर्स को एज स्मॉल आइकन्स एंड द फाइल नेम इज डिस्प्लेड अंडर द आइकन. हम यूज कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड vectors का to locate all files या फिर folders that contain the part in their name. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Which of the following view displays the content as a list of files या फिर folders names preceded by small icons? So the answer here is list. Folder created inside a folder is called subfolder. Which of the following setting is used to change the display of text on the screen and the printed text? Font. Which of the following offers a number of ways to find files and folders? Library. Let's do fill in the blanks. A file is a dash of storage in Windows that enables a computer to distinguish one set of information from another unit. A dash can contain different types of files. Folder. To change the mouse settings, click on dash option in control panel, mouse. Dash and dash are the two wildcard characters commonly used in searching information. First is asterisk and then question mark. To help the user in identifying the content of the folder, dash view displays the image on a folder icon preview. Let's do true false. Hash is a wildcard used to represent any one alphabet character. False. List view is used to view the detailed information about files and folders. There are two panes in Windows Explorer. This is false. A folder can store only one type of files. False. Sticky keys feature automatically deactivates itself if two keys are pressed together. True. And data once stored in a file cannot be changed. False. So students, this was your complete chapter. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.